series of lectures. This is the 18th lecture of this series of CRPC, and we are continuing with the topic trial. Previously, we had seen the court of session trial, and after that, we have seen warrant trial on the police report and warrant trial otherwise than on police report, that is on complaint or information. Now, let's see chapter 20, trial of summons cases by magistrates. सम्मन ट्रायल्स में सब कुछ वैसा ही है. जो सम्मन ट्रायल हमारा शॉर्ट ट्रायल होता है, चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती सम्मन ट्रायल में. सम्मन ट्रायल में कोर्ट आपको सिर्फ आपका एलिगेशन बताएगा, चार्ज पे हियरिंग नहीं होगी. कोर्ट आपको आपका चार्ज बता देगा पर उस पर हियरिंग नहीं होगी. चार्ज तो फ्रेम होता है बट चार्ज पे हियरिंग नहीं होगी. कोर्ट आपको आपका चार्ज बता देगा कि आपने ये ऑफेंस किया, यू आर चार्ज विद दिस ऑफेंस, देयर इज नो हियरिंग. अब उस पर प्ली ऑफ गिल्ट लेकर या तो उसको सीधा कन्विक्शन कर देगा या फिर सीधा प्रोसिक्यूशन एविडेंस, और प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद उसी सीक्वेंस में डिफेंस एविडेंस, बीच में 313 का एग्जामिनेशन करेगा. एंड इफ इट इज एग्जेम्प्टेड तो 313 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट अवे यू गो फॉर डिफेंस एविडेंस, एंड आफ्टर द डिफेंस एविडेंस इज क्लोजेस it applies its judicial mind, pass the judgment, committal or acquittal, the trial is over. So let's see, when in a summons case the accused appears or is brought before the magistrate. When in a summons case, तो summons case क्या है? Offence punishable with less than or equal to 2 years. Offence punishable with less than 2 or equal to 2 years, that is very small offences. In warrant cases more than 2 years punishable, and summon केस में 2 साल या 2 साल से कम punishable. When in a summons case the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him. तो इस सब में ऑफेंस का particulars बताया जाएगा accused को कि तुम्हारे ऊपर इस सेक्शन में, इस लॉ में इस ऑफेंस का चार्ज लगा है. उसमें कोई हियरिंग और एग्जामिनेशन वगैरह कुछ नहीं होगा. इट इज मोर फॉर्मल. पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो बताएगा कोर्ट को कि पुलिस रिपोर्ट इस मैटर पर है या इस सेक्शन में है या कंप्लेंट किस सेक्शन के लिए, और वहां पर डायरेक्टली मजिस्ट्रेट अपना दिमाग नहीं लगाएगा. ही विल टेल हिम द सेक्शन एंड देयर आफ्टर स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स. अब एक चीज याद रखना आपने, इन सम्मन केसेस चार्ज इज नॉट फ्रेम्ड, चार्ज इज ओनली टोल्ड. चार्ज इज नॉट फ्रेम्ड, चार्ज इज ओनली टोल्ड. इसका मतलब इन दोनों में फर्क है. चार्ज फ्रेम मीन्स, चार्ज फ्रेम का मतलब है इन चार्ज फ्रेमिंग देयर इज हियरिंग ऑन चार्ज, देयर इज हियरिंग ऑन चार्ज एंड आफ्टर दैट रीडिंग, एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा. एंड चार्ज टोल्ड, इन चार्ज टोल्ड इट मीन्स द कोर्ट विल नॉट कंडक्ट ए हियरिंग अपॉन चार्ज एंड कोर्ट विल नॉट लिसन द प्रोसिक्यूशन. जब चार्ज टोल्ड किया जाता कोर्ट के द्वारा तो कोर्ट विल नॉट कंडक्ट ए हियरिंग एंड लिसन द प्रोसिक्यूशन. Right away the court will inform the accused that this is the allegation against you. When in summons case the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defence to make. But it shall not be necessary to frame a formal charge. Means the formal framing of the charge will not take place. Only it will be written in the document, and it will be written in the document, and accused will be told that these are the allegations against you. Do you plead guilty? अगर plead guilty करता है accused उस पर तो conviction होगा या trial होगा. अगर plead guilty नहीं करता है then there has to be the trial. 252. If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him thereupon. तो plea of guilt पे उसको magistrate convict कर सकता है. Now 253 हम already पढ़ चुके हैं, recall it. Now section 254. If the magistrate does not convict the accused under section 252 or section 253, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidences as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense. तो सीधा पहले आप चार्ज फ्रेम नहीं करोगे, चार्ज बताओगे, प्ली ऑफ गिल्ट लोगे और उसके बाद सीधा प्रोसिक्यूशन
को बोलोगे कि आप अपने सारे एविडेंस प्रोड्यूस करो। ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं कर पाएगा, बट प्रोसिक्यूशन एविडेंस का एग्जामिनेशन होगा। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद 313 का एग्जामिनेशन कंपलसरी है। लेकिन इफ यू may have read 313, then in some cases the court may dispense with the examination of section 313. In some cases the court may dispense with the examination of 313. हो सकता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद the court does not examine the accused on section 313. Right away it goes for taking the defense evidence, and thereafter the defense evidence will be produced and the case is closed, and thereafter the court will decide the case. ये बहुत छोटा ट्रायल होता है, it is very small trial. If the magistrate does not convict the accused under section 252 or section 253, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense. The magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution or the accused, issue a summons to any witness, directing him to attend or to produce any document or other thing. The magistrate may, before summoning any witness on such application, require that the reasonable expenses of the witness incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in the court. तो इन सब का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीधा क्या, एक्विटल और कन्विक्शन। If the magistrate, upon taking the evidence referred in section 254 and such further evidence, if any as he may, on his own motion cause to be produced, finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. अब यहाँ पर of his own motion means what? कह रहे हैं ना? Such further evidence if any as he may of his own motion. Of his own motion means he can summon court witnesses also. तो वो आप किसी भी ट्रायल में कर सकते हो, इसी ट्रायल में ही नहीं। कोर्ट विटनेसेस को सम्मन तो आप किसी भी ट्रायल में कर सकते हो। कोर्ट विटनेस के लिए आप सम्मन इशू करोगे अंडर द 311 ऑफ द CRPC. Of his own motion means summoning of the court witnesses under the section 311 of CRPC. ये हमने एविडेंस की क्लास में भी पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लिख रख लो। Of his own motion मतलब summoning under section 311 of CRPC. Where the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 325 or section 360, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law. So same thing यहाँ या तो आप सेक्शन 325 में सबमिशन करोगे। अब सबमिशन तो खाली अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो उसको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज फर्स्ट क्लास है तो 2 साल तक पनिशेबल पनिशमेंट है इन ऑफेंसेस में। These offenses are punishable with 2 years only. और 360 में आप प्रोबेशन और एडमोलिशन चेक करोगे, और यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन का कोई मैटर बनता नहीं है, बिकॉज इन प्रीवियस कन्विक्शन द offense would be punishable with 3 years or more. But here the offenses are only punishable up to 2 years. Therefore previous conviction and enhancement of sentence का मैटर यहाँ पे बनेगा नहीं। Therefore previous conviction and enhancement का यहाँ पे sentence का मैटर बनेगा नहीं, because उसके लिए तो section 75 says that 75 of IPC says that the offense would be punishable with 2 years or more. A magistrate may under section 252 or section 255 convict the accused of any offense triable under this chapter. 252 means क्या? 252 means plea of guilt, and 255 is presently we are studying it. A magistrate may under section 252 plea of guilt or section 255 this section convict the accused of any offense triable under this chapter which from the facts admitted admitted by whom? Admitted by the accused, which from the facts admitted or proved he appears to have committed, whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby.
सो व्हाट इज दिस 255 क्या कह रहा है थर्ड क्लॉज? इसको अगर थोड़ा सा याद करो आप 255 क्लॉज 3 को, इज इट नॉट सिमिलर टू 221 और 222 चार्ज फ्रेमिंग? कि आपने ट्रायल शुरू किया एक ऑफेंस पर, and in the course of trial if you found that some other offense has been proved, then normally you have to frame a fresh charge. But here they are saying कि आपने उसको कोई और offense बताया and you started the trial and finally the some other offense is proved, then you don't need to go for reframing of charge. Rather आप other offense पे भी उसको directly convict कर सकते हो if you find that you believe that he would not be prejudiced thereby. Otherwise, section 221 says अगर एक से ज्यादा डाउटफुल चार्जेस हैं और एक का चार्ज लगाया, दूसरे डाउटफुल चार्ज के लिए कन्विक्ट कर सकते हो. सेक्शन 222 says बड़े ऑफेंस का चार्ज लगाया, माइनर ऑफेंस प्रूव हो गया, देन यू कैन कन्विक्ट. तो उसी तरह से इसी स्पिरिट में दे आर राइटिंग हियर दैट इफ यू हैव, यहाँ पे फिर 222 और 221 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Simply if you have told the charge of one offense and in the course of trial some other offense is proved, then you can convict him for other offense also, and you will now not start with the proceedings again for that offense. You need not have to start the proceedings again for the other offense. कारण यहाँ पर क्या है, what is the reason here is, यहाँ पर formal framing of charge तो होता नहीं. There is no formal framing of the charges. You can speak the allegations to him, you will take the plea of guilt and start. अगर जो ऑफेंस का चार्ज आपने बताया तो वो ऑफेंस प्रूव ना भी हो, कोई और ऑफेंस प्रूव हो जाए, and you believe that on the same facts the accused has already taken the defense and therefore he will not be adversely affected by it, then you can always move for what? You can always move for convicting him for other charge. So write down section 255 clause 3 is similar in its spirit as to section 221 and 222. As in section 255 clause 3, even if the accused is found to be guilty of some other offense, there is no need to frame a fresh charge. Rather, the accused can be convicted for that other offense directly, provided that the court is satisfied that the accused will not be affected adversely thereby. So that is about the summons trial, and now we would start with the topic summary trial. देखो summary trial भी summon trial ही है, इसी मेथड से summary trial भी होता है. डिफरेंस होगा सिर्फ जजमेंट की राइटिंग में. In summary trial, the judgment is very brief, means in the form of format, जबकि summon trial में और warrant trial में you write the judgment with good reasonings. But in summary trial the judge follow the format, कुछ particulars भरने होते हैं and the reasons are very very brief. और दूसरा फिर summary trial में आप punishment maximum कितना दे सकते हो, 3 महीने का maximum punishment, जबकि normal summon trials में you can give maximum punishment of 2 years. Before starting that topic, let me discuss a point here, एक query थी that जैसे ये एग्जाम्पल ले रही थी सेक्शन का, is not exclusively triable by the court of session, फिर उसके बाद is exclusively triable by the court. यहाँ पे the court of session यूज हुआ है, यहाँ पे the court वर्ड यूज हुआ है. Here the word use the is referring the court of session used in clause A. clause A में जो court of session यूज हुआ है उसको रेफर कर रहा है ये वर्ड the. That is the rule of interpretation. The word the is mentioning the word used in clause A. The is referring the court used in clause A, court mentioned in clause A. So that is the rule of interpretation. Otherwise also common sense से भी निकाल सकते हैं. The word exclusively tribal is used for the court of session, only magistrate के लिए यूज नहीं होता. So the word court is used for the court of session. Now let's start with the topic summary trial. So as far as the summary trial is concerned, summary trial में आपको 2-3 बातें समझनी है, इसको लिख लीजिएगा जो बता रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, व्हाट ऑफेंसेस कैन पुट अंडर समरी ट्रायल, कौन से ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है. देन वी वुड सी
who can conduct the summary trial? Summary trial कौन करेगा? Then we have to see what is the maximum punishment in the case of summary trial. What is the procedure for summary trial? Summary trial में trial का procedure क्या follow करोगे? And what is the manner of judgment in summary trial? Means how would we record the judgment in the case of summary trial? So broadly these are the main questions related to summary trial. As far as who can conduct summary trial, उस पहले उसको देखिए आप. For the answer of this, see 260 first clause. Who can conduct the summary trial? So the first clause says that the CGM, then Metropolitan Magistrate, then the Magistrate first class only if he is empowered by the High Court. So CGM और Metropolitan Magistrate ये तो अपने आप ट्राई कर सकते हैं. But the JM1 can try only if he is empowered by the High Court. JM2 भी कर सकता है. JM2 also can try, but उसके लिए you have to look section 261. Let's see 261. The High Court may confer on any magistrate invested with the powers of a magistrate of the second class power to try summarily any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months, with or without fine, and any abatement or attempt to commit any such offence. तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कब ट्राई करेगा समरी ट्रायल? ओनली व्हेन द हाई कोर्ट एम्पावर हिम, और हाई कोर्ट भी हर एक ऑफेंस के लिए उसको एम्पावर नहीं करेगा. हाई कोर्ट विल एम्पावर हिम ओनली व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, और पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, एनी ऑफेंस punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months, with or without fine. तो ये आप याद रखिएगा. JM2 cannot try all offences summarily. He can try only when he is authorized by the High Court, and High Court only authorize him for the offences which is punishable only with the fine or punishable with maximum imprisonment of 6 months, with or without fine. JM1 को हाई कोर्ट किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसका समरी ट्रायल हो सकता है उसके लिए एम्पावर कर सकता है हाई कोर्ट. और CGM और MM तो कर ही सकते हैं खैर सारे विदाउट एम्पावरमेंट, उनको तो ऑलरेडी एम्पावरमेंट है बाय दिस एक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैक्सिमम पनिशमेंट यू कैन गिव. उसके लिए आप पढ़ोगे 262 क्लॉज 2. नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months shall be passed in case of any conviction under this chapter. मीन्स जो मैक्सिमम पनिशमेंट आप इसमें दे सकते हो समरी ट्रायल में, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 3 months. अब प्रोसीजर कौन सा फॉलो करोगे? दैट इज गिवन इन सेक्शन 262 क्लॉज 1. इट इज रिटन इन ट्रायल्स अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ someone's case shall be followed except as hereinafter mentioned. Now what manner is followed in the summary trial? That is summons trial. Summary trial में summons trial वाला मेथड ही फॉलो किया जाएगा. Then what remains? What offences can be tried summarily? And दूसरा, what is the manner of giving the judgment? As far as judgment is concerned, तो उसके लिए आप देख लीजिए section 263. You will find that there are certain particulars that you have to specify. In every case tried summarily, the magistrate shall enter in such form as the state government may direct the following particulars. अब उसका एक फॉर्मेट होगा जो आपको भरना होगा, एंड दैट इज व्हाट द जजमेंट. जबकि समन ट्रायल्स में और वारंट ट्रायल्स में इट हैज टू बी अ डिटेल जजमेंट, जबकि समरी ट्रायल में इट हैज टू बी अ फॉर्मेट दैट यू हैव टू फिल. अब क्या क्या होगा उसमें? द सीरियल नंबर ऑफ द केस, द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, द डेट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ और द कंप्लेंट, द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट इफ एनी, the name, parentage and residence of the accused, the offense complained of and the offense if any proved, and in case coming under the clause 2, clause 3, 4, subsection 1 of section 260, the value of the property in respect of which the offense has been committed. अब ये जो section 260 है ये तब समझ में आ जाएगा आपके जब आप पढ़ोगे. उसमें कह रखा है the value of the property should not be more than 2000 rupees.
तो इधर आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन द प्ली ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन इफ एनी। तो जब आपने उसको चार्ज बताया होगा एक्यूज को, समन्स ट्रायल में सिर्फ आप उसको चार्ज बताते हो और फिर उसके बाद प्ली ऑफ गिल्टी लेते हो। So that you have to write whether he pleads guilty or not, and then the finding मतलब the final conclusion, that what you have decided whether he is guilty or whether he is acquitted. Then the sentence or other final order. Then the date on which proceedings terminated. So that's it. अब इसमें कहीं रीजन का जजमेंट का जो रीजन है वो कहीं नहीं लिखा है, बट द रीजन ऑफ द जजमेंट हैज टू बी रिटन। इसके लिए आप 264 पढ़ो। इन एवरी केस ट्राइड समली इन विच द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एंड ए जजमेंट कंटेनिंग ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द फाइंडिंग। मीन्स द रीजन शुड नॉट बी वेरी डिटेल्ड, और अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होंगे, सिर्फ एविडेंसेस बताए जाएंगे और जो रीज़न है आपके जजमेंट का वो लिखा जाएगा, और फिर लास्ट में उसको आप लिखोगे दैट ही हैज़ बीन एक्विटेड और ही हैज़ बीन कन्विक्टेड। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अदर जजमेंट एंड दिस जजमेंट इज दैट हियर you have to write the judgment in very brief and in a particular format, and in reasons of judgment the all possible details should not be written, plus the appraisal of the evidences should also be very brief, jabki other judgments may it all be in very detail. So that is the only difference. अब लास्ट का आपका रहता है in what cases the summary trial can be conducted. अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कब ट्राई करेगा समरी केसेस को, जब हाई कोर्ट ने अलाउ किया है, एंड वो भी तब जब ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली विद फाइन, और या फिर 6 मंथ तक का पनिशेबल है विद और विदाउट फाइन, बट अदरवाइज अदर कोर्ट कैन ट्राई। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट पढ़ो 260 का। तो ये तो फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, CJM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब इसके आगे का पढ़ो। मे इफ ही थिंक्स फिट ट्राई इन ए समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। अब ये ऑफेंसेस आप पढ़ोगे, दे आर ऑल स्मॉल ऑफेंसेस। अब जैसे थेफ्ट लिखा है, थेफ्ट इज पनिशेबल विद 3 years। अब उसमें आप 3 साल वाले तक को ट्राई नहीं कर सकते, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू ऑफ अप टू 2000 रुपीज। समरी ट्रायल बेसिकली जितने भी सम्मन केसेस है उसमें आप समरी ट्रायल कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशंस डाल रखी हैं, क्योंकि कोई भी ऑफेंसेस जो 2 साल तक पनिशेबल है, दैट इज सम्मन्स केस, you can go for summary trial. Any offense which is punishable up till 2 years, listen it carefully, any offense which is punishable up till 2 years, that is summons case, you can always try it summarily. But any offense which is punishable with more than 2 years, that is not a summons case, that cannot be tried summarily. But there are some offenses which are punishable more than 2 years, which are punishable with more than 2 years, they are also put under summary trial, और उसकी लिस्ट दे रखी है यहाँ पर। But in that case they are saying the value of the subject matter should not be more than 2000 rupees. जैसे पहला क्लाउज क्या कहता है, offenses not punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years. तो क्या होगा, what that offense is called, that is summons case। 2 साल तक के पनिशेबल ऑफेंस के साथ समरी ट्रायल कर सकते हो। एनी ऑफेंस पनिशेबल अप टू 2 years, यू कैन डू समरी ट्रायल। या तो नॉर्मल समन ट्रायल करो, और या फिर यू कैन टेक इट टू द समरी ट्रायल। लेकिन अगर आप समरी ट्रायल करोगे तो पनिशमेंट कितना दे सकते हो, मैक्सिमम 3 month मैक्सिमम। इफ यू गो फॉर समरी ट्रायल इंस्टेड ऑफ समन ट्रायल, देन यू कैन गिव ओनली मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 3 months। इफ यू वांट टू गिव मोर देन 3 months punishment, then you have to convert it into normal summons trial। उसके बाद you see theft का पनिशमेंट 379 में कितना है, 3 years। 380 में कितना है, 7 years। 381 में कितना है, 7 years। so 379, 380 और 381 में IPC में जो पनिशमेंट है, that is obviously more than 2 years। Still summary trial can be done if the value of the property is less than or equal to 2000 rupees।
Theft under section 379, 380 or 381 of IPC where the value of the property stolen does not exceed 2000 rupees. Similarly, receiving or retaining stolen property under section 411 of the IPC where the value of the property does not exceed 2000 rupees. Similarly, assisting in the concealment or disposal of stolen property under section 414 of IPC where the value of such property does not exceed 2000 rupees. मतलब 2 साल तक पनिशेबल कोई भी ऑफेंस या फिर थेफ्ट, एनी काइंड ऑफ थेफ्ट, और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी 411 और concealing or disposal of stolen property 414 if the value of the property is not more than 2000 rupees. Then the offenses under 454 and 456 of IPC. 454 and 456 are related to lurking house trespass या फिर house breaking. So 454 is lurking house trespass or house breaking in, and 456 is lurking house trespass or house breaking in the night. In cases में भी they are saying you can do summary trial. इसमें value of property का कोई मतलब नहीं है because this is not related to theft etc. Further, insult with intent to provoke a breach of peace under section 504 and criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both under section 506 of the IPC. And further they are saying abatement or attempt of any of these offenses. अब कितने offenses हो गए? 2 साल तक punishable कोई भी offense या फिर theft 411 receiving or retaining the stolen property या फिर assisting in concealment or disposal of stolen property 414 या फिर 454 या फिर 456. theft में 411 और 414 में value should not be more than 2000. Value of the property should not be more than 2000. 454, 456 lurking house trespass या house breaking in the day or in the night. इनमें भी summary trial कर सकते हो आप. और last remaining the 504 and 506 of IPC. इनमें भी summary trial कर सकते हो. और इनमें से किसी भी offense का abatement हुआ हो या फिर attempt हुआ हो उसका भी आप summary trial कर सकते हो. So इसमें you have to remember these clauses. And last is section 20 of the Cattle Trespass Act. Any offense constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act. There also the summary trial can be done. Second clause, when in the course of summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this code. अब जैसे कोर्ट ने 2000 के किसी प्रॉपर्टी का 2000 तक के किसी प्रॉपर्टी का थेफ्ट हुआ है और कोर्ट ने उसका ट्रायल शुरू किया समरी ट्रायल. अब इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट फाइंड्स दैट द मैटर इज कॉम्प्लिकेटेड एंड द समरी ट्रायल इज नॉट सफिशिएंट एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड टू गिविंग ओनली द पनिशमेंट अप टू 3 months. क्योंकि समरी ट्रायल में 3 मंथ से ज़्यादा आप पनिशमेंट नहीं दे सकते और मजिस्ट्रेट को ट्रायल के दौरान लग रहा है कि मैं 3 मंथ से ज़्यादा इसमें पनिशमेंट दूं. सो इन दैट केस द मजिस्ट्रेट विल स्टॉप द ट्रायल एंड ही विल कन्वर्ट द केस इनटू व्हाट नॉट इन द समन केस बिकॉज थेफ्ट इज पनिशेबल विद 3 years imprisonment. सो ये नॉर्मल केस हो जाएगा, इस वजह से वारंट ट्रायल में इसको कन्वर्ट करेगा. एंड ही विल कन्वर्ट द ट्रायल इनटू वारंट ट्रायल्स और सारे विटनेसेस को फिर से बुलाएगा एंड फिर से ही विल री एग्जामिन देम. बिकॉज द थेफ्ट इज पनिशेबल विद 3 years तो उसको आप समन ट्रायल में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि समन ट्रायल में खाली 2 साल तक पनिशेबल ऑफेंसेस आएंगे. देयरफॉर यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ वारंट ट्रायल बिकॉज इट इज क्लियरली रिटन may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided. In the manner provided. अब 3 साल के लिए manner provided कौन सा? Warrant trial by this code. So that is all about the topic. You have to read it and make the points. और जो भी मैंने बोला है small points that you have to, I hope that you have wrote and noting down at that time only. अब क्वेश्चन में अगर आ जाए कि समरी ट्रायल बताइए और समरी ट्रायल और समन्स ट्रायल में डिफरेंस बताइए, तो एक डिफरेंस तो ये बताना पड़ेगा आपको किस किस ऑफेंस का समरी ट्रायल और समन ट्रायल हो सकता है. समन ट्रायल 2 साल के तक पनिशेबल किसी भी ऑफेंस का हो सकता है
और समरी ट्रायल 2 साल तक के पनिशेबल ऑफेंस का तो हो ही सकता है। उसके अलावा ये जो थेफ्ट एक्सेट्रा लिखा हुआ है इनका भी हो सकता है। इनका नॉर्मल समन ट्रायल नहीं हो सकता, बिकॉज दीज ऑफेंसेज आर 3 years और मोर देन 3 years पनिशेबल ऑफेंस, मतलब 2 साल से ज़्यादा के पनिशेबल ऑफेंसेज हैं। तो लेकिन आप सबको इसलिए वारंट ट्रायल में इन सब ऑफेंसेज को ले लोगे। दूसरा डिफरेंस की पनिशमेंट आप कितना दे सकते हो। समन ट्रायल्स में आप 2 साल तक का दे दो, लेकिन समरी ट्रायल में यू कैन गिव ओनली मैक्सिमम ऑफ अप टू 3 months। समन्स ट्रायल कोई भी कोर्ट कर सकता है, और जबकि समरी ट्रायल the first class judicial magistrate and second class judicial magistrate should be empowered by the High Court. And in summary trial, the judgment should be brief, and in summon trials, the judgment would be normal. So these are the main differences. और पढ़ोगे तो और ज़्यादा differences दिख जाएंगे. So that's it for this lecture and this topic. Thank you for watching this lecture.